મારું નામ યશ પટેલ છે. હું રાયપુર છત્તીસગઢથી આવું. હું કાર કોસ્મેટિક ટ્રેનિંગ માટે આવ્યો હું. અહીંયા મને આવીને બહુ વખત લાગ્યું છે. મેં ગૂગલ સર્ચથી આવ્યો હતો. બીજા બી જોયા પણ આ ઘણું સારું લાગ્યું મને. 90% હું શ્યોર હું કે આમાં આગળ કરી શકું. 10% તો કે હજી મેં ચાલુ નથી કર્યું. થેન્ક યુ. Hi, my name is Aitya and I'm from Hyderabad. Yeah, I was searching for detailing courses so that I can open my studio in my hometown. And while searching, I came across car cosmetic in Google search. And after that, I contacted this one and also one another. But I got good response from car cosmetic. And the training was nice, staff was friendly. Compared to other coaching centers, it is nice. And also, my confidence level is better from when I came to till now. It is grown a little bit. माझं नाव प्रथमेश कानेकर आहे. मी मुंबईवरून आलो आहे. माझा आधी व्यवसाय कार ॲसेसरीजचा होता. तर मला डिटेलिंगची पण खूप आवड होती. तर मी गुगल आणि यूट्यूबवर सर्च केल्यावर मला कार कॉस्मेटिकचे रिव्ह्यूज खूप छान आले. आणि तसंच नाही तर इथे आल्यावर मला एक्सपिरियन्सही खूप छान मिळाला आहे. क्लास पूर्ती नव्हे तर इथे राज सर आणि हार्दिक सर या दोघांनी खूप सपोर्ट केला आणि खूप चांगल्या प्रकारे शिकवलं. जर कोणाला इथे पुढे फ्युचरमध्ये डिटेलिंगचा काय कोर्स करायचा असेल तर ही जागा खूप अप्रतिम आहे. थँक्यू. Hello, my name is also Philippines. I'm workshop में आया हूँ ट्रेनिंग के लिए. यहाँ आने के बाद ट्रेनिंग हुआ, बहुत बढ़िया हुआ. मुझे लगता है मैं जाके कर सकता हूँ सब काम. बहुत बढ़िया है एक्सपीरियंस यहाँ पर. हमारे यहाँ सब बढ़िया थे. सब चीज डिटेलिंग सीख गई है, अच्छे से सीख गई है. बहुत बढ़िया है. मैं मेरा नाम श्रेयासप्री गोस्वामी है. मैं कटनी शहर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ. मेरी एज 20 है. मैं बहुत से कार कॉस्मेटिक और जैसे अपने ये डिटेलिंग स्टूडियो के बारे में सर्च कर रहा था में, पर जो मुझे बेस्ट स्टूडियो अभी तक लगा है ट्रेनिंग सेंटर के लिए वो कार कॉस्मेटिक लगा है. यहाँ पे जो हमें ट्रेनिंग सपोर्ट वगैरह मिलता है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी वगैरह जो हमें सिखाई जाती है उसमें बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है. साथ ही साथ जो स्टूडियो है वो बहुत ही क्लीन और टॉप क्वालिटी के अपने टूल्स वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं. और अभी तक जो भी मैंने सीखा है तो अब मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ गया है, जिससे मुझे लगता है कि मैं खुद का भी स्टूडियो प्रोफेशनली चला सकता हूँ.